Hello, my dear friends. Now I hope I'm clearly visible and audible to every one of you. A very, very good evening to all of you. Kavya Bhanushali, good evening. You have a doubt in form filling? Yes, definitely you can ask. You don't have to ask any doubt. Sanket, good evening. Dictator Trade, good evening. A very, very warm welcome to all of you in IPMAT Smart Prep 2026, where we are preparing for IPMAT and JIPMAT examinations primarily, but other exams also like NPAT and SET, which will help you in taking admissions in different BBA or integrated program in management offered by different colleges. So friends, as you would remember, like I can see some of the names who were also present in the last session. So as you would remember that we have started with data interpretation in this IPMAT Smart Prep series for 2026 preparation. And data interpretation में जो हमने start किया था last class में हमने tables जो tabular data होता है किस तरीके से हम tabular data को deal करते हैं, right? And किस type के questions आ सकते हैं like which basically covers different concepts related to percentages, averages, and ratios, right? Now, today we are going to handle a different kind of data set, that is bar graphs. Okay? So last class में हमने देखा था कि डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में गिवन है. आज हम देखेंगे डेटा बार ग्राफ की फॉर्म में गिवन है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेटा विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन ग्राफ और पाई चार्ट. Right? Now, data can be given in any which ways, but the most important thing is understanding and solving of the questions and dealing with those complex calculations that you will encounter while solving those questions. Okay? So, we'll be taking up all these things. Now, meanwhile, Kavya, you have asked, sir, my 10th mark sheet is submitted in my junior college because I am in Maharashtra board. So can I upload DigiLocker copy? I also have black and white copy. Please guide me, sir. Yes, Kavya, you can definitely upload. Okay. So see, कोई भी authentic copy हो आपके पास वो आप upload कर सकते हो. They don't want कि original हो. ठीक है. तो सबसे पहले अगर आपके पास DigiLocker पे अपनी मार्कशीट की कॉपी है, आप वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर उसी फोटो का स्नैपशॉट लेके आप डेफिनेटली अपलोड कर सकते हो. सी व्हाट दे वांट टू हैव अ प्रूफ ऑफ योर मार्क्स. ठीक है, मार्क्स आपके ही हैं वो, राइट? एंड किसी भी टाइम पे अगर आपसे बोला जाए कि आपने ये जो स्कोर किया है इसको प्रूव करो, सो यू हैव द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट. ओके, एंड आपकी तरह ऐसे हजारों स्टूडेंट्स होंगे और इस साल नहीं हर साल ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जूनियर कॉलेज में मार्कशीट सबमिटेड होती है. तो यू आर नॉट वन ऑफ केस, ये बहुत कॉमन चीज है. तो इस चीज के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटा. यू कैन गो अहेड, डिजीलॉकर वाली मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो उसका स्नैपशॉट लेके. अदरवाइज आपने जैसे बोला कि आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी है तो आप उसको भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हो. बट आई वुड रिकमेंड जो डिजीलॉकर पे कॉपी है आपके पास उसको अपलोड करो. ऑलराइट. Sanket, I have mailed you the doubt that my doubt support is not working but doesn't. ओके, सो संकेत, जो आपने मेरे को मेल भेजा था वो मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट को यार सेंड कर दिया है. सो इमीडिएटली वंस दिस क्लास गेट्स ओवर आई टेक पर्सनल फॉलो अप ऑफ दैट. ऑलराइट संकेत, चलिए. थैंक यू काव्या. सो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का जो टॉपिक है, आज का जो एजेंडा है उस चीज पे आते हैं. तो आज का एजेंडा मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं. we'll be looking at one of the data sets, one of the data interpretation set, जिसमें जो डेटा होगा वो बार ग्राफ की फॉर्म में गिवन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बार ग्राफ में वैल्यूज किस तरीके से रीड करते हैं. ओके, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इट्स इनफैक्ट इट्स वेरी इजी पिकिंग अप द वैल्यू फ्रॉम द बार ग्राफ. अब मुश्किल पार्ट जो होता है ना वो क्वेश्चंस में होता है. तो अगर आपको साइकोलॉजिकली ये लगता है ना कि टेबलर डेटा इजी होता है, बार ग्राफ डिफिकल्ट होता है, पाई चार्ट तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस को आपको टैकल करना आना चाहिए, बेसिक स्टेटमेंट्स ऑफ परसेंटेजेस से डील करना आना चाहिए. ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी,
A is what percentage less than B, A is what percentage of B, इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनसे डील करना आना चाहिए. Okay, right? So let's begin today's lecture. But before that, I have a very, I would say, helpful information for all of you. Now, this information is related to All India IPMAT mock test. So we are conducting All India mock test, which will be free for all the students who have enrolled with us, either in the paid batches or free batches. फ्री बैचेस जो हमारे YouTube पे चलते हैं, अगर आपने उस पे भी एनरोल करवाया हुआ है, so these all India mock test will be available on your portal. ठीक है, so डिटेल्स देखते हैं. 8th of February 2026 All India IPMAT Indore mock test will be live at 12 p.m. सबके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, either they have enrolled for our paid batches. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे पेड बैच में एनरोल्ड हो, चाहे फ्री बैच में एनरोल्ड हो, ठीक है, किसी भी बैच में एनरोल्ड हो, these tests will be live on these dates which are mentioned here. So 8th of February को ऑल इंडिया IPMAT इंदौर मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा 12 बजे. 15th of February 2026 को ऑल इंडिया IPMAT रोहतक मॉक टेस्ट will be live at 12 o'clock. And then 22nd February 2026 All India JIPMAT mock test will be live at 12 o'clock, right? So make sure that, since you are attending this class, I am sure you must have enrolled for the YouTube free batch. तो ये सारे mock papers आप लोग भी दे सकते हो, and I would say that you must attempt these mock papers. All right. So all the best for these mock tests, and we'll continue with the same thing in the upcoming days. Okay. चलिए. Now. तेजस, आई थिंक आप कुछ पूछ रहे हो, ठीक है. सो दोस्त, एक काम करते हैं, आज का जो एजेंडा है उसको कवर अप करते हैं. इट विल टेक 20-25 मिनट्स, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, एंड देन आई विल कम बैक एंड विल टेक द पर्सनल डाउट्स. ओके, इफ यू डोंट माइंड. सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. नाउ द डेटा that will help you in solving all the questions of today's class is on your screen. I'm giving you 1 minute to analyze this data. If you are done analyzing this data, please post done in the chat box. Come on. Sanket, I'll definitely answer to your query, but before that, you will have to answer to the questions that I'll be asking you based on this bar graph. Okay? All right, I'm waiting for all of you. Please post done in the chat box once you have done the analysis, once you have understood the data and you want me to take you to the questions. Very good, nice, good. So AI Express, Sanket and Dictator, 3 students, only 3 students. Okay. Chaliye. Now, I don't know what other students are doing. You don't have to do anything in this. अभी कुछ करना ही नहीं. तो अगर आप हर एक वैल्यू को रीड करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप इस बार ग्राफ को टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है. You don't have to do anything. Okay? So bar graph is there. Until and unless you see the questions, you cannot do anything. Okay? So सबसे पहली चीज जो हमें एग्जाम में करनी है, as soon as we see the bar graph, is move on to the questions as soon as possible. ठीक है. अब डेटा यहां पे क्या वैल्यू है, ये 50 है, ये 60 है. द वैल्यूज आर इजीली रीडेबल. सो इफ यू नो हाउ टू रीड अ बार ग्राफ, अगर बार ग्राफ रीड करना आता है, देन यू विल हैव टू डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. ऑल्सो यहां पे जो भी डेटा दिया हुआ है वो बहुत सीधा साधा डेटा है, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, राइट?
So you can pick up direct values, number of passengers for bus, metro and airlines for the years 2012, 13, 14, 15 and 16. 5 years का डेटा दिया हुआ है and 3 modes of transportation है, बस, मेट्रो एंड एयरलाइन. That's it. बस इतना ही देखना है आपको and you will have to directly move on to the questions. काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इस बार ग्राफ को टेबल में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं एंड हियर इज वेयर वी वेस्ट लॉट ऑफ आवर टाइम. तो हमें वो चीज नहीं करनी है. तो यहां पे ये बार ग्राफ बहुत ही डायरेक्ट बार ग्राफ है. ओके, इसमें डेटा की प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं आपको एक बार ग्राफ देता हूं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को देख के हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, या फिर किसी केस में लॉस है तो हम लॉस या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं. बट दैट डज नॉट मीन दैट विल हैव टू डू इट फॉर ईच एंड एवरी ईयर और ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट इज मेंशन्ड इन द बार ग्राफ. नहीं, क्वेश्चन की जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरीके से एक्ट करेंगे, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन. ओके, तो ये सबसे पहली आई वुड से गुरु मंत्र है कि आपको क्या करना है, इस डेटा को देख के कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्वेश्चंस पे मूव करना है. ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करने वाला हूं. डेटा हर क्वेश्चन के साथ गिवन होगा. So question number 1 on your screen based on this data is on your screen. Go ahead and give me answer for this one. Let's see who will be the first person who will give me a correct answer for this question. In 2015, airline passengers represented what percentage of all passengers on bus, metro and airlines in that year? Right, so plenty of you have answered option D as the answer. चलो चेक करते हैं ऑप्शन डी आंसर है या फिर नहीं. So question is asking in 2015 airline passengers. So 2015 यहां पे है, ठीक है. Now are we able to read the data carefully or correctly? Now y axis पे स्केल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60. अगर बार्स की बात करें तो बार्स ये वाला 2012 की अगर वैल्यू पिक करनी है तो यहां से लेफ्ट साइड में जाएंगे, दिस विल बी 50, दिस विल बी 60. ओके, ना 2013 में अगर मुझे ये वाली वैल्यू रीड करनी है, दिस इज बिटवीन 50 एंड 60, तो ये वाला वैल्यू 55 हो जाएगा. ओके, इट मे बी रिक्वायर्ड लेटर ऑन, राइट? सो यू नीड टू करेक्टली रीड द वैल्यूज विच आर देयर इन द बार ग्राफ. डन. अब बात करते हैं 2015 की. एयरलाइन पैसेंजर्स, सो एयरलाइन पैसेंजर्स इज विद ब्लैक कलर. सो यहां से अगर हम जाते हैं, what is the number of airline passengers? It is 20. So airlines passenger is 20. Okay, and these numbers are given in 10,000s, right? तो जहां पे भी इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्ट नंबर की, वहां पे हम इस चीज को पिक कर लेंगे, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? ओके, आगे चलते हैं. So in 2015, airline passengers was what percentage of all the passengers of bus, metro and airline? So the first number 20 is what percentage of the sum of these numbers? Okay.
Now sum of these numbers, this is 60, this is also 60, and this is 20, right? So 60 plus 60 plus 20, right? So it will become 20 upon 140, and that is 1 upon 7. Now 1 upon 7 in terms of fractions है, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, so it will be equivalent to 14.28 परसेंटेज, राइट? सो अगर परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस याद हैं थोड़े बहुत, तो यहां पे इस पॉइंट पे आके, इस मोमेंट पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, सो 1/7 मुझे याद है 14.28 होता है। कैन यू टेल मी किस किस को याद है? जस्ट यस लिख दो, किस किस को याद था 1/7 14.28 परसेंटेज होता है? यस लिख दो चैट बॉक्स में। आंसर तो ऑप्शन डी है, बट तुमने कितना टाइम लगाया ये चेक हो जाएगा। तो यस 1/7 14.28 परसेंटेज होता है, ये किस किस को याद है? लवली लवली, वेरी गुड। संकेत एंड प्रदीप, डिक्टेटर, किशन, लवली, वेरी गुड, कीप इट अप। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The number of airline passengers in 2014 was approximately how many lakhs fewer than the number of metro passengers in 2013? Oh, very good. Tanushri, that was very quick. And Sanket and Kishan and AI Express. AI Express, you are answering like an express. Very good. Okay. Lovely. Now, I'm just asking all of you, tell me, how will you rate the level of difficulty of this question? Easy, E for easy, M for medium, D for difficult. Easy, moderate, difficult. How will you rate the level of difficulty of this question? Jaldi, E, M, D, E, M, D. Easy, moderate, difficult. Nice, nice. I also think the similar all of you have said. So, आंसर इज ऑप्शन ए 30। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स इन 2014, सो दे आर टॉकिंग अबाउट 2014, द नंबर ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स इन 2014 was approximately how much fewer than the number of metro passengers in 2013. 2014 2013, this is the twist. गलत हो सकता है अगर 2014 2014 कर लिया। So airline passengers in 2014, हमने यहां पे देखा एयरलाइन पैसेंजर्स इन 2014 कितना है? 20, ओके। एंड मेट्रो पैसेंजर्स इन 2013, ये नंबर कितना है? दिस नंबर इज 50। और हमने इनका डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना आया? 30, एंड हमने 30 मार्क कर दिया आंसर, एंड ये आंसर गलत हो गया। ओके, ये आंसर गलत हो गया, राइट? ओके, अब सबने बोला यार इजी क्वेश्चन था, तब भी गलती हो गई। गलती इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट की वजह से नहीं होती, गलती होती है केयरलेसनेस की वजह से, जल्दी आंसर मार्क करने की वजह से। ओके, राइट? अब क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं। द नंबर ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स इन 2014 वाज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लैक्स फ्यूअर देन व्हाटएवर। ओके, नाउ इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक हिंट भी दिया था। पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पे मैंने सर्कल किया था नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 10,000। तो ये जो भी नंबर्स हैं ये 10,000 में है। सो दिस इज 20, नंबर ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स इन 2014 इज 20 इंटू 10,000। 20 इंटू 10,000 कितना होता है? इट इज 2 lakhs। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज 2 lakhs। अगर मैं लैक्स में कन्वर्ट करता हूं, इट इज 2 lakhs। ओके, सेकेंड नंबर इज 50 इंटू 10,000, दैट इज 5 lakhs। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? नाउ यू कैन टेल मी।
Which among these four options should be the correct answer? आया समझ में कहां गलती करते हैं हम? ओके, सो प्रदीप इजी स्क्वायर कट गए ना मार्क्स, हाँ नेगेटिव मार्किंग हो गई। ओके, सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। कॉन्फिडेंस इज वन थिंग विच इज वेरी गुड, बट यार ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, जनरली ये चीजें इग्नोर कर देते हैं। दीज थिंग्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अगर इग्नोर करोगे, पता लग गया क्या प्रॉब्लम आएगी। इजी से इजी क्वेश्चन में हमने 30 सेकेंड्स दिए, 1 मिनट दिया, वट एवर टाइम वी हैव गॉट, वी हैव गिवन, हाँ, बट उसके बावजूद भी हमने नेगेटिव मार्क्स अट्रैक्ट किए। ये नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी like ignored. So correct answer is option D, that is 3 lakhs. Okay, आगे चलते हैं। आई एम श्योर आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा अब। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने बहुत ध्यान से क्यूरेट किए हैं, बहुत ध्यान से बनाए हैं, एंड आई हैव टेकन केयर ऑफ द प्लेसेस वेयर द स्टूडेंट्स कैन कमिट मिस्टेक। ओके, ऑलराइट उज्जवल, यू हैव ज्वाइंड जस्ट नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा बहुत सिंपल है, यू कैन स्टिल कंटिन्यू एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, okay, so only 4 students are there who have given their answers. A Express, Christian, Sanket and Dictator. Only 4 students. So let's see what should be the answer of this one. If the average bus fare per passenger is 10 rupees, so bus ka average fare hai 10 rupees. Okay, and average airline fare is how much? Is 5,000 rupees. And they're talking about which year? 2016. They're talking about 2016. Then the ratio of the total fare for airline and for bus. So airline and bus का ratio find out करना है. Okay? तो bus का average fare 10 है. 2016 में bus में number of passengers कितने हैं? It is 60. So total money collected will be 10 multiplied by 60. Okay? And the same thing will do for airline. Average bus fare multiplied by the number of passengers. So number of passengers here, it is 20. Okay. Now one more place where we have to be a little careful. Ratio पूछा है. Ratio किस चीज का पूछा है? Bus and airline या फिर airline and bus. Okay. ये चीज ध्यान से.
then the ratio of total fare of airline passenger to the total fare of bus. So ratio पूछा है airline and bus का, ठीक है। अब यहां पे भी ये गड़बड़ करते हैं, डेटा दिया हुआ है पहले बस का एंड देन एयरलाइन का, और हमसे पूछा है एयरलाइन अपॉन बस, तो यहां पे भी हम मिस्टेक कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके, सो एयरलाइन अपॉन बस, सो एयरलाइन का कितना हो गया 5000 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड बस का कितना हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, सो 0 0 0 एंड 0 कैंसिल, 6 एंड 2 कैंसिल 3, आंसर आ जाएगा 500 अपॉन 3। मजे की बात ये देखो 300 अपॉन 3 अपॉन 500 भी ऑप्शंस में है, बट आंसर क्या आना चाहिए 500 अपॉन 3। ओके, सो ये एक और जगह है जहां पे हम मिस्टेक कर सकते हैं, एंड मैं देख सकता हूं किसी ने भी मिस्टेक नहीं किया। That's lovely. So you have learned something from the previous question. That's fabulous. Good. So let's move on. Look at the next question, number 4. So what is the percentage increase in the passengers traveling by bus, metro and airways from 2012 to 2016? All right, so your answer is option A, that is 20 percentage. Let me see some more answers. Good, 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 very good. All right. Now, question is, what is the percentage increase in passengers traveling by all the three modes of transportation from 2012 to 2016? So, base year 2012 and final year is 2016. 2012 में total number of passengers find out करते हैं. It is 50, 60. So, 50 plus 60 plus. This one is between 10 and 20, that is 15. So 125 is the number of passengers in the year 2012. Now in the similar manner, can you give me the total number of passengers of 2016? Come on, I just want to see this number from every one of you. 2016 के total number of passengers बताओगे? All right, thank you Sanket. So 2016, it is the 60 plus 70 plus 20, that is 130, sorry, 150. All right, so 150. So initial value कितनी है 125, final value कितनी है 150, and I have to find out the percentage increase. Percentage increase find out करना है. Percentage increase का formula क्या होता है? Percentage increase is equal to final value minus initial value divided by initial value into 100. Okay? Now final value minus initial value, इनका difference कितना है 25 upon initial value 125 into 100. Okay? In fact, आप सिर्फ इस fraction पे भी work कर सकते हो 25 upon 125, which is 1 upon 5. 1 upon 5 कितना percentage होता है 20%. So answer of this question will be 20%. Okay?
So 20%, option A is the correct answer. ठीक है जी, चलो. So option A 20%. Now I'm going to do something different for the next question. Next question, question number 5. I'm going to remove options of that question. ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को रिमूव कर रहा हूं मैं अभी आपके सामने ही. All right, gone. So now you have the question number 5 without options and you will have to write your answer. And मैंने यहां पे आपके सपोर्ट में एक बहुत बड़ा, बहुत अमेजिंग वर्ड लिख दिया है, अप्रोक्सीमेटली. तो आप अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर दे सकते हो. ओके, so you can give your approximate answer. The number of bus passengers in 2012 is approximately what percentage more or less than the average number of bus passengers in the given years? प्रदीप पोल नहीं यार, आंसर अब मुझे देखना है, ठीक है ना. So you will have to write the answer, not option. Option तो है ही नहीं यहां पे. So you'll have to write the final answer in the chat box. So options का सपोर्ट आपके लिए चला गया है यहां से. You all can give me an approximate answer. ठीक है, approximate answer चलेगा, बिल्कुल चलेगा. All right, so Arfradu says 17.5% more. All right, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 17.5% more. So you will have to tell me more or less as well. So the way I have got the answer from one of the students who says 17.5% more. यहाँ पे लिखा हुआ है ना more or less. So you'll have to mention this as well. प्रदीप मेरे को more या less भी चाहिए होगा. So you will have to complete your answers and you have written more. Okay. So 14% more. All right. Chalo, whatever answers you will be giving, they will become the options of this question. And AI Express says 12.28% less. 12.28% less. All right. And Tanushri, I need the nature of your answer. Meanwhile, I'm taking the answer of Sanket. So Tanushri, 21.2% more or less, please mention. Meanwhile, Sanket says 12.25% less. So Sanket, 12.28, 12.25, I'll consider them similar. Okay. So मैं आपका आंसर नहीं लिख रहा, आपका ऑप्शन नहीं लिख रहा. 12.28, 12.25 are more or less equal. Right? Tanushri, I'm waiting for your answer to be completed. So please tell me, Tanushri, 21.2% more or less. Dictator, 12.28% less. 12.28, Tanushri, less. Okay, so Tanushri says 21.2. 21.2% less. And no different answers. ठीक है. Tejas, please don't spam. And I'm giving you one last option from my side. One last option from my side. None of these. Okay. So none of these. Now the answer is one of these. अब आंसर इनमें से एक है. चलो चेक करते हैं क्या आंसर होगा. ओके. हाँ संकेत, फाइन. सो अब यहां पे आ जाते हैं. So now I'm not writing any other option. And let's work on this answer. The number of bus passengers in 2012
number of bus passengers in 2012, it is 50. Okay, so this number is 50. Is approximately what percentage more or less than the average number of bus passengers in the given year? I think some of you would have ignored this average number of bus passengers in the given year. So let's calculate the average number of bus passengers in all these years. I think you would like to change your answers. So bus passengers in 2012 is 50. 2013 it is 55. 2014 60, then 60, then 60. 60 plus 60 plus 60. And I'll have to divide it by 5 because they are asking about the average. Okay, so average. So in सबका sum कितना हुआ? 180, 280, 285 whole divided by 5, and this number comes out to be 57, right? 57. Average is 57. Pradeep, एक बार प्लीज दोबारा से सम चेक कर लो यार. All of you please check if I have made any mistake or not. Is it correct? 285 is the sum divided by 5 comes out to be 57. यहां तक सब कुछ ठीक है? Yes or no? Perfect. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Now what we have to do here is we have to find out 50 is the first number, is what percentage more or less than 57. Okay, right? This is what we'll have to find out. So first of all, 50 is less than 57. How much less? 5. Sorry, 5 nahi, 7. My bad. So 50 and 57 में difference कितने का है? 7. Divided by than the average, that means denominator में जाएगा 57 multiplied by 100. Okay, so 7 upon 57 multiplied by 100, this should be the answer of this question. Okay, 7 upon 57. Now which one among these answers is correct now? Come on, tell me. Approximately कितना आएगा आंसर? Yes, people, what is the approximate answer that you are getting? 12.28 less, percentage less. So 12.28 percentage less should be the correct answer of this question. ठीक है? So काफी students ने शायद ये average पे work नहीं किया होगा, और 50-57 इनका difference देखना है. Then denominator क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए या 57? तो यहाँ पे क्या है? Dan के बाद जो भी है, Dan the average number of bus passengers. So average. So ये जो 57 average निकालना है, this will go in the denominator. So 7 upon 57 into 100, 12.28 percentage less. And yes, we have one of these among the answers. So that's it. Sir, my 12.25 less. Sanket, your answer was exactly like approximately correct. So yes, if you are saying 12.25, it is also fine. Good. Okay. So 12.28 percentage is the correct answer. Percentage less. Okay. So that's all about all the 5 questions that we'll have to do in today's class. ठीक है, तो आज यहीं पे ही रुकते हैं. But some of you have some queries, so let me resolve those queries. So whatever queries you have, please put it in the chat box. Meanwhile, we have an all India IPMAT mock test. Not 1, not 2, but 3 all India IPMAT mock tests free for all of you, right? Now, these tests will be free for all the students who have enrolled in either our paid batches or free batches. So even if you are a student of our free batch, then you can take all these tests. They will be live on 8th of February 2026. The first test, which will be All India IPMAT Indore mock test. It will be live at 12.
15 February 2026, All India IPMAT Rohtak mock test will be live at 12 p.m. And last one, 22nd February 2026, All India JIPMAT mock test will also be live at 12 o'clock. Okay. Now, one of the students asked me कि सर ये वाले टेस्ट 8th, 15th and 22nd को लाइव होंगे, तो क्या हम इनको 2 या 3 दिन तक दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जिस दिन लाइव होंगे ये 12 o'clock लाइव होंगे एंड सेम डे फिनिश हो जाएंगे, right? So these tests will not be available for the next day. Okay, right? So Sanket, I have answered your query. Tejas, you are asking if I prepare now, then the exam will be cleared. I have cleared all my basics. Yes, Tejas. See, it is possible. And every year, a lot of students, they do this thing. In fact, आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते हैं एंड एग्जाम क्लियर हो जाता है. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि जो भी अभी स्टार्ट करेगा उसका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच हार्ड वर्क यू डू, कितना अच्छे से पढ़ाई करते हो, उस पर डिपेंड करेगा. अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपके पास अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप अभी स्टार्ट करते हो एग्जाम को क्लियर करना. ओके सर, रेडार ग्राफ भी आता है एग्जाम में. किशन, ऐसा कुछ नहीं है कि आता है या नहीं आता, सिंपल सी बात है, आ सकता है. ठीक है. सो रेडार चार्ट्स भी आ सकते हैं एंड वी विल कवर, अगर इफ यू वांट. ठीक है. बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ के बाद हम रडार चार्ट्स भी कवर कर लेंगे. बट अभी तक इस लेवल के क्वेश्चंस, रडार चार्ट के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, जनरली नहीं आते, बट आ सकता है. ओके सर, फ्रॉम हाउ डेज मॉक विल बी लाइव? संकेत, आई हैव आंसर्ड यू. थैंक यू तनुश्री. नेक्स्ट संकेत, नेक्स्ट विल बी लाइन ग्राफ्स. ओके, लाइन ग्राफ के बाद हम पाई चार्ट करेंगे. ऑलराइट सर, ये मॉक ऐप पर भी अवेलेबल होंगे? यस तनुश्री, ये मॉक ऐप पर ही अवेलेबल होंगे. यस, संकेत ने आंसर दे ही दिया. तनुश्री, ऐप पे ही अवेलेबल होंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ईदर एनरोल्ड फॉर आवर पेड बैचेस और फॉर आवर फ्री बैचेस. ऑलराइट, ठीक है. So I think I have answered to all the queries asked by the students. So friends, that's all from my side for the day. A big thank you to all of you for being lovely, wonderful part of today's session. Thank you all of you, and I'll see you in the next session wherein we'll be taking up questions based on line graphs. All right. So bye-bye all of you. Have a good day. Bye-bye.